Good evening, sir. Good evening. Good evening. So very good afternoon to all. Today we will start with depreciation. Okay, what is depreciation? First of all, depreciation is charged from whom, on which asset depreciation is charged. Always remember that depreciation is always charged on fixed asset. Okay, what are the fixed asset? Land, building, etc. They are known as a fixed asset. Okay, current assets are never depreciated. Current assets are never depreciated. And intangible asset, they are amortized. Okay, amortized means they are written off over a period of time. Intangible asset, what are intangible asset? Goodwill, copyright, trademark, patent, license, franchise, they are intangible asset. Current asset are what? Cash in hand, cash at bank, stock, they are current asset. They are not depreciated, never depreciated. Only fixed assets are depreciated. Land is not depreciated. Land is an appreciable asset. Land value does not decreases. Those asset whose value decreases during the course of time is known as here there only depreciation is applied. Okay, where the value of the asset does not decreases over a period of time, their depreciation is not adopted. Okay. So the process of converting this fixed asset into an expenses over a period of time, दिस फिक्स्ड एसेट जो है उस जो भी एक्सपेंसेस उसका खर्चा हो रहा है डिक्रीज हो रहा है टाइम पीरियड का अंदर उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन एंड माय स्टूडेंट डेप्रिसिएशन इज अ नोशनल एंट्री व्हाट इज अ नोशनल एंट्री नोशनल एंट्री मींस उसको हम ओनली डालेंगे हमारे हाथ से कुछ पैसा नहीं जाएगा सपोज आप एक कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदे उसका दाम 40,000 रुपीज है 2015 में आप खरीदे हो
2020 में उसका दाम हो गया 15,000, तो where that 25,000 went? 40,000 में खरीदे थे, अब जो बेचोगे उसका वैल्यू है 15,000, where that 25,000 went? The 25,000 is the depreciation. ओके, आप हाथ से कुछ गया नहीं मतलब द वैल्यू डिक्रीजेस, आप कुछ नहीं रिड्यूस किए हैं, जो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है आप उसको एंट्री दिखाना पड़ेगा। तो बड़ा बड़ा एसेट जो है, फिक्स एसेट, मशीनरी, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, उसका डेप्रिसिएशन होता है। कंप्यूटर का भी डेप्रिसिएशन है, लैपटॉप का डेप्रिसिएशन है, मोबाइल का भी डेप्रिसिएशन है। एक मोबाइल अगर आप खरीद के लाए, उसको एक दिन का बाद अगर बेचोगे, सपोज उसका 15,000 कॉस्ट होगा, एक दिन का बेचने से उसका 12,000 हो जाएगा उसका रेट, 10,000 हो जाएगा उसका रेट। वाई? बिकॉज ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू यूसेज। ओके, इसलिए उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग इज कंप्यूटेड एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मेथड? देयर आर 9 मेथड इन डेप्रिसिएशन। इसको भी आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन दो ठो इंपोर्टेंट मेथड है, मैं बोल दे रहा हूँ, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड और एक तो WDB मेथड। ओके, तो स्ट्रेट लाइन मेथड और WDB मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड को आपको ध्यान देना पड़ेगा और WDB मेथड को ध्यान देना पड़ेगा। उनका दूसरा नाम भी है। ओके, उसका बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो डेप्रिसिएशन आपको पता चल गया, इट इज अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल डेफिनेशन, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, जो एसेट का वैल्यू डिक्रीज होगा उसका वो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। जो एसेट का वैल्यू डिक्रीज नहीं होगा, जैसे लैंड, उसका वैल्यू डिक्रीज नहीं होता है, उसका वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ता है, तो उसका वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 6 बोलता है डेप्रिसिएशन। ओके, एंड डेप्रिसिएशन देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज नॉन कैश एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? तुम्हारा हाथ से कुछ नहीं जाएगा, ओनली यू हैव टू शो द एंट्री, इट इज अ नोशनल एंट्री। ओके, इट इज एलोकेटिंग द कॉस्ट। जो कॉस्ट अब है एसेट खरीदने के बाद, सपोज 5 साल के बाद वो एसेट का डेप्रिसिएशन वैल्यू 0 हो गया। सपोज 1 लाख का कुछ एसेट खरीदे थे उसका वैलिडिटी है 10 साल, एवरी ईयर 10,000 उसका वैल्यू डिक्रीज हुआ, डेप्रिसिएशन आप 10,000 डाले, 10 साल का बाद 1 लाख खत्म हो गया, बिकॉज एसेट का वैल्यू 10 साल का बाद 0। अगेन 10 साल का बाद आपको एक नया एसेट खरीदना पड़ेगा। ठीक है, फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट सम प्रोविजन। द प्रोविजन इज आल्सो नेसेसरी according to CIMA। whenever you are writing definition, you put definition of good organization, good institutions. Okay, like CIMA. CIMA means Certified Institute of Management Accountant, London. What does it? They tells is the decrease in value of an asset. Okay, due to use or due to time. टाइम के लिए अब मैं बोल रहा था, मोबाइल जो खरीदे एक दिन का बाद अगर बेचोगे उसका रेट घट जाएगा, और इफ यू आर यूजिंग दैट देन आल्सो द वैल्यू डिक्रीजेस। So the maybe physical purpose the causes of depreciation, maybe functional purpose the causes of depreciation. Okay, or maybe sometime it get destroyed. The asset may get destroyed if you are keeping it only in home, not using. Also the asset value decreases. That asset get destroyed. The asset also become obsolete and outdated. Okay, and in case of mines, you know, there also depreciation is allowed, and that is only depletion. Mines and oil mines. Mines they only use depletion. Intangible asset amortization, fixed asset depreciation, current asset no, nothing is applied. Why this need for charging the depreciation? Is there any important significance that we should charge depreciation? If you are not charging depreciation, my dear student, you will not get the true profit. If you are not getting the true profit, you are not able to get the calculate the correct taxable amount. If you are not getting the taxable amount, you cannot identify the cost of an asset. If you are unable to identify the cost of an asset, you cannot provide allocation of cost. If you are unable to provide allocation of cost, then the wealth maximization, profit maximization of the organization will be affected. If you are unable to identify the allocation of cost, then you cannot replace that asset. The replacement of asset after the expiry or when it is outdated is a necessary important function of the organization. There are four things which are very essential in case of depreciation. One is what is the cost of an asset, okay, and another is what is the working life, how many years the asset will work, and another thing is when you are selling that, what is the cost of the asset, okay, the value that you know is the residual value, the salvage value, the scrap value, and when you are using the asset for a long period of suppose 5 years, 10 years, 20 years,
how much amount of money has been spent on the repair. And what is the legal provision? Okay. What is the provision as per Company Act? I've already told, as per Company Act 1956, or now it is Company Act 2013. Depreciation will be charged on straight line method. Original installment method. But in case of income tax, if you charge depreciation, it will be charged on the WDB method or return down value method. Okay. Or diminishing balance method. The method of different name. If there is asset is obsolescence outdated, then you can change the method of production, you can change the design, you can change the model, you can change the demand. You have to focus on the supply of the public, supply of the customer and consumer. So another term is there, dilapidation. Dilapidation means these are the short questions. Dilapidation means what? Any damage done to any building or a property, that is known as a dilapidation. Okay. Any damage done to building or property during the tenancy, that is known as dilapidation. If you are taking on a lease from government, you will take lease from 90 years, for 99 years, mines, etc. were taken on lease. And during the period, if any damage is done, that is known as dilapidation. See, the entries for depreciation, you have to remember when you are purchasing an asset, what is the entry? Asset account debited to cash. If you are purchasing on cash, if you are purchasing on check, asset account debited to bank. And providing depreciation account debited to asset. Depreciation, you remember, it's a nominal account. Okay, it is in expenses. So depreciation account debited to asset account. Asset is a real account. For transferring of depreciation, PL account debited to depreciation. The depreciation find place in the PL account, and also it get deducted from the asset in the asset side of the balance sheet. Another difference I want to tell, that depreciation, and there is a difference between depreciation and provision for depreciation. Depreciation is in the form of nominal account, and provision for depreciation is in form of valuation account. And depreciation is debited to PL account, but in provision for depreciation does not find any place in the PL account, because we are creating provision for that. And depreciation is a short period account, and provision for the depreciation is a long period account. Remember this. Depreciation is debit, but provision for depreciation is a credit. Very, very important point. Provision for depreciation is a credit. Okay, but depreciation is a debit. Depreciation is an expense. Provision for depreciation is an income, because you know that there is a depreciation, for that you are keeping such amount of money aside. And depreciation account is not shown in balance sheet because it is deducted from the asset in the balance sheet. But in provision for depreciation is shown on the liability side of the balance sheet. And the formula of depreciation I will tell you. And the formula is original cost plus any repair minus scrap value divided by number of years life, number of working life of the asset. Okay. So the journal entry is important to apply. Okay. There are 9 methods, but the 2 important methods, one is fixed installation method or straight line method or original cost method. In that case, what it is done, I am telling it. Suppose the cost of the asset is 1 lakh, and you are putting 20% depreciation on that. So every year, okay, it will be 20,000. So 21st is 20,000, second is first is 20,000. After deducting from 1 lakh, it is 80,000. Then second year again 20,000. The 20% would be on the principal amount, the 1 lakh amount. Okay. So again 20,000, from 80 to 20, it is coming 60, and from 60 again 20,000. 20,000 means 5. Why there is 20,000? From 1 lakh it is 20%. So 20,000. So 60 to 20, if you deduct, it is 40. Again 20,000, from 42, if you deduct 20, it is 20. Again on the 5th year, it is 20,000. 2020, it will be 0. So after a period of 5 years, the asset value will be 0 on straight line method. But in case of written down method, it's the same asset. First to deduct 20, the first year will be same in case of straight line method and WDB method. In second year, suppose it is 80,000, you have to deduct 20% on 80,000, not on 1 lakh. So it will be 16,000. Then it will come 64,000. Again 20% on 64,000. Okay. So written down value method. So whatever the value is coming down after deducting, that value on we have to put 20%. So this is the huge difference. Written down value method. That is also known as diminishing balance method.
Written down value method is also known as diminishing balance method. There are 9 methods in methods of depreciation, but these two are very, very important. One is this fixed installation method and reducing balance method. The fixed installation method, the first year, and in case of the reducing balance method, the first year the depreciation amount is same. In case of fixed, the asset value will be 0. But in case of another important thing, in case of written down method, the value of asset will never be 0. It may be negative, but it will not be never 0. The depreciation is calculated on the original cost of asset in case of fixed, but down value method, the depreciation is calculated on the book value. Book value means the value of the asset minus depreciation. That is the book value. When provision for depreciation account is there, then you charge depreciation in relation to provision for depreciation. That is provision account debited to provision for depreciation account. And when it transferred to PL, then PL account debited to depreciation account. When it is disposed of, then provision for depreciation account debited to asset account. This is all about your depreciation account. We will go to final account. Okay, this is another unit. The final account is a totally problematic paper, but you should understand the theory. Final account are divided into 2 aspects. One is with adjustment, another is without adjustment. We'll go first with without adjustment. That is important. Without adjustment, if you understand, then you'll go to with adjustment. First, you have to understand. In case of final account means the account which is final. So, conclusive proof of the evidence of the organization, which tells us about the financial position of a business, financial health of a business. After making entry in journal, ledger, subsidiary book, trial balance, then we go for manufacturing, trading, profit loss account, and final and balance sheet. So we have to understand the format. If you are unable to understand the format अगर समझ लोगे तो तुमको पता चल जाएगा तो वो फॉर्मेट में क्या है. Suppose it is a trading organization फॉर्मेट में क्या है. Left side of an account is known as debit and right side of an account is known as credit. ये तुमको याद रखना है. लेफ्ट में जो होगा डेबिट और राइट में जो होगा क्रेडिट. ये इंडियन का सिस्टम है. If you go to America, they are following in a different way. They are following on the left side credit and right side debit. Okay, but हमारा यह सब टाइम याद रखना है. The left hand side of an account is known as a debit and the right hand side of an account is known as credit. इसको हमको याद रखना है सब टाइम. तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, लेफ्ट में क्या आएगा, राइट में क्या आएगा. ओके, लेफ्ट में आएगा डायरेक्ट ट्रांजैक्शन, ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. राइट में क्या आएगा, डायरेक्ट इनकम. दिस यू रिमेंबर. डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, ओपनिंग स्टॉक होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस. यू परचेज एनीथिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस. परचेज का रिटर्न होगा तो माइनस करना पड़ेगा. कैरेज इनवर्ड होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा. डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा. ठीक है, दिस इज ऑन द डेबिट साइड. और क्रेडिट साइड में क्या होगा, आपका सेल होगा, सेल्स रिटर्न होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, दैट इज डायरेक्ट इनकम. तो डायरेक्ट इनकम ओवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, अगर कुछ बचता है, इफ देयर डिफरेंस अराइजेस, दैट डिफरेंस इज नोन एज द ग्रॉस प्रॉफिट. Again, I am repeating. In trading account, the debit side is known as the direct expenses, and the credit side is known as the direct income. तो डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करने से जो बच जाएगा डेबिट साइड, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है. तो बड़ा फॉर्मेट क्या, मैं एक तो छोटा फॉर्मेट का बोला, बड़ा फॉर्मेट में बोल रहा हूँ क्या क्या आइटम आएगा. क्रेडिट साइड में कम आइटम आता है, तो पहले आप क्या करेंगे, किसको टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट को टोटल करेंगे. बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर द ईयर एंडिंग. एक साल के लिए प्रिपेयर होता है, शुरू से खत्म. तो क्रेडिट में रहेगा आपका सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, इतना रहेगा. अच्छा, अभी एक तो क्वेश्चन आएगा, इफ डेबिट इज मोर देन द क्रेडिट, देन ऑन क्रेडिट साइड यू हैव टू राइट बाय ग्रॉस लॉस. इफ क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, देन ऑन द डेबिट साइड यू हैव टू राइट टू ग्रॉस प्रॉफिट. अच्छा, डेबिट साइड में आइटम ज्यादा है, क्या आएगा, जो बोल चुका हूँ आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, दिस आर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस. कोल, फैक्ट्री इंश्योरेंस, मोटिव पावर, ऑक्ट्राई, इंपोर्ट ड्यूटी, पैकेजिंग चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी, फैक्ट्री का लाइटनिंग,
फोरमैन का सैलरी, वर्कमैन का सैलरी, कंज्यूमेबल स्टोर, इंपोर्ट ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, दिस आर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन टेकिंग इम्पोर्टेंट रोल इन द बिजनेस. अगर इसको आप नहीं खर्चा करेंगे तो बिजनेस नहीं चल पाएगा, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो ये सब डेबिट साइड में आएगा. ठीक है, अभी जाएंगे फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट. प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमको क्यों बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बना पाएंगे. तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट है तो आएगा क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट. अगर ग्रॉस लॉस होगा तो आएगा डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट. ओके, यू कैरी फॉरवर्ड दैट. तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्या फॉर्मेट है? इस बड़ा फॉर्मेट है बिकॉज ज्यादा आइटम है, ट्रांजैक्शन है. विल गो विद द स्पेसिमेन. ऑलवेज फॉलो द स्पेसिमेन फर्स्ट. अगर स्पेसिमेन में आपको आइटम का पता हो जाएगा कौन सा आइटम कहाँ पर getting posted, then you can easily do the accounts. Profit loss account be that same thing. On the left side it is known as debit, on the right side it is known as credit. और क्रेडिट में क्या क्या आइटम मैं बोल देता हूँ पहले. जितना आप रिसीव, जितना आपका इनडायरेक्ट इनकम, उसमें डायरेक्ट इनकम था, इसमें इनडायरेक्ट इनकम. ओके, डेबिट में क्या होगा? जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो इनडायरेक्ट इनकम में क्या क्या है? पहले इंटरेस्ट, दूसरा कमीशन, थर्ड डिस्काउंट, fourth dividend, fifth any better received, कुछ सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, कुछ एसेट बेचे उसका कुछ प्रॉफिट है, कुछ ड्राइंग का पर इंटरेस्ट मिला, एनी अदर रिसीप्ट, मिसलेनियस इनकम, एनी इनकम जो तो आपको मिला है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा. दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट इनकम. ओके, मे बी नॉट बी रिलेटेड टू द बिजनेस आल्सो बिकॉज इफ यू आर सेलिंग फिक्स्ड एसेट मे नॉट योर बिजनेस, बट आपका दुकान का कुछ था, खराब हो गया था, उसको बेच के आप नया एसेट खरीदोगे तो जो बेच किए दैट इज योर इनकम. तो डेबिट साइड में जो इनडायरेक्ट आपका एक्सपेंसेस है उसमें बहुत बड़ा लिस्ट है. क्या आएगा? आपका सैलरी आएगा, आपका इंश्योरेंस आएगा, आपका रेंट आएगा, ठीक है, आपका पोस्टेज चार्जेस आएगा, आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, सैलरी आएगा, हाउस रेंट आएगा, शोरूम का रेंट आएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आएगा, इंटरेस्ट लोन, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन आएगा, चैरिटी आएगा, डोनेशन आएगा, बहुत सारा चीज आएगा. जब when we are preparing this finance profit loss account, first को make total of the credit side. क्रेडिट साइड को पहले टोटल करिए, उसका माइनस करिए डेबिट साइड. ज्यादा चांसेस में क्रेडिट माइनस डेबिट, तो डेबिट में कुछ बचता है उसको बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट. That net profit will be shown on the liability side of the balance sheet, will be added to the capital account. अगर प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो क्रेडिट साइड में आएगा आपका नेट लॉस जो बहुत कम आता है. ज्यादा नेट प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ता है, ज्यादा भी आता है. ठीक है, अभी आ गया आपका बैलेंस. ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया, अभी बैलेंस शीट. ठीक है, बैलेंस शीट का पहले मैं आपको बोलूंगा एसेट. कितना टाइप का एसेट ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस किया था, फिर भी मैं और एक बार बोल रहा हूँ. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेट्स आर देयर? देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ एसेट. वन इज फिक्स्ड एसेट. तीस एसेट को डिवाइड किए दो टाइप्स के, एक तो टेंजिबल एसेट, एक तो इंटेंजिबल एसेट. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड टेंजिबल अकाउंट और इंटेंजिबल अकाउंट, सेम थिंग. टेंजिबल मींस व्हिच कैन बी टच्ड. इंटेंजिबल मींस व्हिच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन. इंटेंजिबल में आपका आता है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लैंड आता है. लेकिन एक्सेप्शन इज दैट लैंड इज इन एप्रिसिएबल एसेट. ओके, एवरी फिक्स्ड एसेट एप्रिसिएशन चार्ज होता है, बट लैंड का क्यों नहीं होगा? बिकॉज उसका वैल्यू इंक्रीजेस. ओके, अदर एसेट वैल्यू डिक्रीजेस. आपका फिक्स्ड एसेट, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दिस वैल्यू डिक्रीजेस. लैंड को आपको पता है इसका वैल्यू इंक्रीज होता है.
Another thing like that is if LIC इंश्योरेंस प्रीमियम उसका वैल्यू भी डिक्रीज होता है. तो एसेट कितना टाइप का एसेट है? करंट एसेट ज्यादा है, मैं बोल रहा हूँ करंट एसेट का ऊपर. आपका कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, बिल्स, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड. वेस्टिंग एसेट क्या है? वेस्टिंग एसेट आपका है माइंस, ऑयल वेल एक्सेट्रा. और इट है फिक्टिशियस एसेट. व्हाट इज दिस फिक्टिशियस एसेट? Example is preliminary expenses. Preliminary expenses means the expenses which are incurred before starting up a business. Example, suppose you purchased the land in 2010. You started the work in 2011. It completed in 2014. You started business in 2015. Profit आपका आया 2017. तो 2010 से 2017 आप जो खर्चा किए उसको कैसे दिखाओगे आप अकाउंट्स में? Those expenses are known as preliminary expenses. You have to show. Because if you are not showing, then the profit you have to profit will be more. Then you have to pay tax more. इतना खर्चा जो कि आपको दिखाना पड़ेगा. आप खर्चा अगर नहीं दिखाओगे तो प्रॉफिट घटेगा नहीं. Because actually this expenses have been incurred. बस बिजनेस स्टार्ट हुआ 15 में, 17 से प्रॉफिट हुआ. ठीक है. When there is a loss, you cannot pay tax. You know, cannot show. तो 17 जो हुआ है तो आपको दिखाना पड़ेगा. You have to write for a period of 10 years. Okay. लाइबिलिटी भी वैसे ही है. आपका कैपिटल लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में कैपिटल है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, डिबेंचर है. ठीक है. करंट लाइबिलिटी है, बिल पेबल है, सन्डी क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी भी है. In case of balance sheet, two method है. One is that is known as marshalling of balance sheet. What is this marshalling of balance sheet? Means the sequence of putting the assets and liability in the balance sheet. Okay. एक तो है परमानेंसी मेथड और एक तो लिक्विडिटी मेथड. ठीक है. लिक्विडिटी मेथड में क्या आएगा जो ज्यादा फॉलो हम करते हैं? पहला आएगा आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ऐसे आएगा. ओके. पहला आएगा क्या? करंट एसेट, उसका आएगा फिक्स्ड एसेट, उसका आएगा आपका फिक्टिशियस एसेट. लाइक दिस इट विल कम, which we follow regularly, liquidity model. और परमानेंसी में उसका अपोजिट. तो लेट्स फोकस ऑन द लिक्विडिटी एस्पेक्ट. बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहला आएगा करंट एसेट और द एसेट साइड. बैलेंस शीट का अकाउंट नहीं है, डेबिट क्रेडिट नहीं है, उसका दो तो साइड है, एक तो एसेट साइड, एक तो लायबिलिटी साइड. एंड लायबिलिटी साइड में कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ दैट. व्हाई कैपिटल इज अ लायबिलिटी? बिकॉज जो कैपिटल हम इन्वेस्ट किए बिजनेस में, बिजनेस हैज द राइट एंड रिस्पांसिबिलिटी टू गिव सम इंटरेस्ट, गिव सम रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. जो करंट एसेट में उसमें जो आइटम है उसमें आएगा पहला, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, बिल्स, बैड डेट, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स, सब आ जाएगा. उसका फिक्स्ड एसेट आ जाएगा, उसका फिक्टिशियस एसेट आएगा. इसमें लायबिलिटी साइड में क्या आएगा? पहले करंट एसेट आएगा, उसका फिक्स्ड लायबिलिटी आएगा. सॉरी, करंट लायबिलिटी पहले आएगा, उसका फिक्स्ड लायबिलिटी आएगा, उसका रिजर्व आएगा. ओके. उसका कैपिटल आएगा. बैलेंस शीट अगर टैली हो गया, सब बोलते हैं कि इट इज करेक्ट. इन स्पाइट ऑफ दैट द बैलेंस शीट इफ इट टैलीड देन आल्सो माइट बी सम मिस्टेक. बैलेंस शीट टैली होने से भी कुछ मिस्टेक हो रहता है. उसको आप डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मिस्टेक इन बैलेंस शीट, इट आल्सो टैलीज. ओके. तो नेक्स्ट, बट मैक्सिमम टाइम 99% द बैलेंस शीट इज टैलीड मींस द अकाउंट्स इज ओके. इट इज अज्यूम्ड. Next, we have left manufacturing account. What is this manufacturing account? The manufacturing account format also is like that of a trading account. Manufacturing account कहाँ पर applicable होता है? When a business is manufacturing any product. Trading account कहाँ पर applicable होता है? When business is not manufacturing but is only dealing with retail business. Okay. कहाँ से खरीदता है उसको बेचता है. Manufacturing में क्या आएगा? वही आएगा आपका सेल आएगा, closing stock आएगा. And here closing stock means क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आपका रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इधर आएगा नहीं. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहां पर रहता है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड में क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. उसका जो आइटम मैं बोला था ट्रेडिंग में, वो सब आइटम इधर भी आएगा. ओके. मैन्युफैक्चरिंग में भी वही है, जो डायरेक्ट डेबिट साइड में है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम. द फॉर्मेट यू हैव टू अंडरस्टैंड. फॉर्मेट अगर आपका अंडरस्टैंड हो गया और कौन सा आइटम कहां पर गिरेगा तो अगर पता चल गया तो यू कैन इजीली डू दैट. देन विल गो टू द फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट. ओके. फाइनल अकाउंट
सॉरी विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट हो गया मतलब कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब वी आर स्टडिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडजस्टमेंट नहीं था, अभी एडजस्टमेंट आ गया, मतलब एक का आइटम दो जगह गिरेगा उसका ट्रीटमेंट, वन आइटम विल बी पोस्टेड इन टू प्लेसेस, तो देयर इज एडजस्टमेंट. If one item is posted in only the same places, there is no adjustment. Okay, two places or three places means suppose one item question is given, you have to put either in trading or balance sheet before without adjustment. But with adjustment means they are putting that in trading and balance sheet simultaneously, or putting in profit loss account and balance sheet simultaneously, or putting in manufacturing and balance sheet simultaneously. This is a little bit complicated, because you have to understand the journal entry. Okay, the journal entry is very important. If you are unable to understand the journal entry, then it will get difficult or confusion, because adjustment in final account means bringing all record of items which have been not included in trial balance. ट्रायल बैलेंस में अगर कुछ छूट गया है, जैसे हम पढ़ रहे थे कल, एरर्स डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, जो एरर डिस्क्लोज नहीं हुए हैं ट्रायल बैलेंस, अगर कुछ छूट गया है वो इधर एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा फाइनल अकाउंट को टैली करने के लिए. ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ एक तो, जैसे प्रीपेड रेंट है. प्रीपेड रेंट का मतलब क्या है? द रेंट व्हिच यू हैव पेड बिफोर. जब व्हेन यू आर टेकिंग एनी हाउस ऑन एज अ टेनेंट, ओके, तो उसको आपको एडवांस देना पड़ता है. तो व्हेन यू आर पेइंग द एडवांस, दैट इज नोन एज प्रीपेड रेंट. 2 महीने का एडवांस दे तो यू आर टेकिंग द होम एंड देन पेइंग एवरी मंथ. So that 2 month will be given to you, because you have to give notice of 2 months to the owner that you are living. So at that time, the 2 month will be adjusted or will be given if you are paying the rent regularly on the monthly basis. तो prepaid rent का entry क्या है? Prepaid rent account debited to rent. Okay. तो prepaid rent कहाँ पर अप्लाई होता है? Prepaid rent is an advance. The advance means it is an asset. Okay. The prepaid rent is one of the assets of the balance sheet. And rent कहाँ पर होता है? It is on the debit side of the PL account. तो डेबिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट में जितना रेंट होगा इतना आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी आप दे चुके हैं पहले. ओके, इस साल से पहले आप दे चुके हैं, तो इस साल में काउंट नहीं होगा, उसको डिडक्ट करना पड़ेगा. तो रेंट जो पीएल में अकाउंट में है उसको इस प्रीपेड रेंट से उसको डिडक्ट करना है, और जो प्रीपेड रेंट का जो रेंट है उसको एसेट से बैलेंस शीट में उसको डालना है. Another question is that accrued income. What do you mean by accrued income? Income earned हुआ है but not received. Example, आपका 2 महीना हो गया, सैलरी मिला नहीं, बट यू हैव डन द वर्क, दैट इज नोन एज अक्रूड इनकम. अक्रूड, ACCRUED, accrued income. That also will be shown on the asset side of the balance sheet, and any income shown on the credit side of PL, जितना हुआ है accrued income वो उसको एडिशन हो जाएगा. ठीक है, जैसे PL में बाय इनकम रिसीव्ड आर accrued income, आर accrued income जो है उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप डालना है. There are various items also like goods given as free samples. आपको मेडिसिन है जैसे फ्री सैंपल आपको मिलता है, चैरिटी आप देते हैं, गिफ्ट आप देते हैं, उसका एंट्री आपको याद रखना पड़ेगा. उसका एंट्री है, if you are giving us free sample, the MR are giving us free sample, they're doing the advertisement. If you are giving on charity, it will give charity. If you are giving as gift, you have to take as gift. The entry will be advertisement account debited to purchase, because from the purchase you have to deduct that this much amount has been given on advertisement. The bookseller also give sample books to the author. They also deduct from the manufacturing segment that this is the number of books in stock, and deducts this number of books which have been given in sample. तो ये आपको जर्नल एंट्री का ध्यान देना पड़ेगा. बहुत सारा जर्नल एंट्री है, that you have to remember. If you are not remembering, then it is very difficult to identify and do the transaction. Abnormal loss of stock due to accident, उसको भी ध्यान से रखना है. गुड्स इंश्योरेंस आपका है तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर. ये पार्शियल इंश्योरेंस है, मतलब कुछ मिलेगा तो लॉस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर. ओके, if goods are lost due to accident, then loss by fire account debited to trading. Trading क्यों? Because goods है. If goods were not insured, then PL account debited to loss by fire. Commission is important thing. Another important thing is that commission अगर दो चीज है, commission on payable to manager before charging such commission,
एंड कमीशन इज पेबल एट फिक्स परसेंटेज ऑफ नॉट पेड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर बिफोर है तो उसका फॉर्मूला है मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट बाय 100। अगर आफ्टर है तो मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। आफ्टर है तो 100 प्लस रेट होगा नीचे, बिफोर है तो नीचे खाली 100 रहेगा। उसका जनरल एंट्री है मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। तो एडजस्टमेंट एंट्री में क्या है, आपको आइदर एडिशन करना है ट्रेडिंग में और डिलीशन करना है ट्रेडिंग में और पीएल में करना है सेम चीज और बैलेंस शीट में करना है। तीनों जगह से मैन्युफैक्चरिंग इधर और मैन्युफैक्चरिंग में करना है। तो ज्यादा मैक्सिमम ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट होता है। तीनों जगह से दो जगह का आपका काम 100% होगा। ठीक है, दो जगह में उसका आपका काम 100% होगा तो आपको उधर डालना पड़ेगा 100%। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट थिंग बिकॉज आपको उसको प्रैक्टिस नहीं करने से वो डिफिकल्ट होगा। तो विल गो टू नेक्स्ट ब्लॉक, हमारा जो है कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर क्यों आया और कैसा है? पहले सोल ट्रेडर था, उसका पार्टनरशिप आया। ठीक है, सोल ट्रेडर आया, पार्टनरशिप आया, उसका बाद आपका आया कंपनी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन आया, देन जॉइंट कंसाइन द कंसाइन द पर्सन हु वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर। जॉइंट वेंचर में उसे इसी जॉइंट वेंचर ऑफ टाटा एंड कोमो, जॉइंट वेंचर ऑफ हीरो एंड होंडा, जॉइंट वेंचर ऑफ दिस उषा लेक्सस, ओके, जॉइंट वेंचर ऑफ भारती एयरटेल, जॉइंट वेंचर ऑफ मारुति सुजुकी। तो जॉइंट वेंचर में काम करने का क्या फायदा है? जॉइंट वेंचर में काम करने का ये फायदा है कि बाहर का कंपनी आके आपका एरिया में रहेगा, द ब्रांडिंग ऑफ द आउटसाइड कंपनी यू विल यूज एंड यू विल गेट बेनिफिट। ओके, योर ब्रांडिंग विल बी डन परफेक्टली। When goods are sent by one person to another, okay, for sale, that is known as consignment, and the person who sent is known as the consignor, and the person who received is known as consignee. The feature of the consignment is that they are sent for a commission, they are sent for a business, they are sent for a property of the consignor. The consignor does not sell the goods to the consignee. He tells the consignee to sell on behalf of the consignor. The consignee agrees to sell. I've already told. The consignee agrees to sell at a certain rate of commission. When it is not sell, the consignee will do on behalf of the consignor. Any stock remaining with the consignee would belong to the consignor. Any loss affected or getting risks or fraud dealt with the consignee will be bear by the consignor solely and responsibly done by the consignor himself. Then the question arises, what is difference between sale and consignment? See, sale, there are two persons are there, buyer and seller. In case of consignment, two persons are there, consignor and consignee. In sale, after you sell, the risk passes to the buyer, but in case of consignment, when you are giving the goods to the consignee, the risk is still with the consignor. In case of sale, the expenses incurred after the sale is by the buyer, but in case of consignment, the expenses incurred by sending the goods to consignee are borne by the consignor. Return of goods is not possible when the goods are sold if not transferable, but here the goods are returnable if not sold. कंसाइनर कंसाइनी को भेजा है, अगर कुछ उसमें गुड्स डिफेक्ट है तो कंसाइनी रिटर्न कर देगा कंसाइनर को, तो ये चीज भी हो पाएगा। प्रोफार्मा इनवॉइस और बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंसाइनमेंट कुछ भेज रहा है, कंसाइनर कुछ कंसाइनमेंट में भेज रहा है, तो डिटेल्स ऑफ द बिजनेस उसको भेज रहा है, तो उसको लिखना पड़ेगा कौन सा आइटम है, कितना नंबर आइटम है, कितना चार्जेस है, पैकिंग का क्या चार्जेस है, फ्राइट का क्या चार्जेस है, इंश्योरेंस का क्या चार्जेस है, उसको लिखना पड़ेगा। And another thing is account sales.
when the performer invoice is sold by the consignor to consignee, the consignee after a certain period of time or after the end of the month जितना भी सेल हुआ है उसको तो अकाउंट सेल उसको बोलते हैं, सेल का डिटेल देके उसको भेज देगा कि इतना सेल हुआ है, इतना मेरा कमीशन है, इतना मेरा खर्चा हुआ है. Who? The consignee. The consignee will send to the consignor. That is known as account sale. इधर कमीशन दो टाइप का है, एक तो ऑर्डिनरी कमीशन, आपका फिक्स्ड परसेंटेज ऑन सेल, सपोज 20% सेल का ऊपर, और स्पेशल कमीशन दो टाइप का है, एक तो ओवरहेडिंग कमीशन और एक तो डेल क्रेडिट कमीशन. डेल क्रेडिट कमीशन क्या, अगर जितना सेल कंसाइनर बोला है कंसाइनी को, अगर कंसाइनी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो कंसाइनी पूरा बोलेगा कि आप, सॉरी गलती बोल दिया, डेल क्रेडिट कमीशन क्या है, नहीं, डेल क्रेडिट कमीशन क्या है, अगर कुछ चीज कंसाइनर कंसाइनी को भेजा है, तो अगर कंसाइनी कुछ नहीं बेच पा रहा है तो कंसाइनर क्या बोलेगा, आप इतना परसेंट में आपको दे रहा हूँ, I want this much number of unit to be sold. Okay, you do as much as you can. आपका जैसे हिसाब है आप बेचिए, लेकिन मुझको इतना पैसा चाहिए, आप मुझको दे दीजिए, इतना सेल करिए यूनिट, इतना पैसा मुझको दे दीजिए, आप देखिए आप कैसे उसको बेचेंगे, आप इतना रेट में बेचिए, इससे ज्यादा रेट बेचिए, लेकिन मुझको इतना पैसा दे दीजिए, तो इसके लिए मैं आपको कमीशन ज्यादा दूंगा. ओवरहेडिंग कमीशन मींस जो फिक्स कमीशन है उससे और थोड़ा ज्यादा कमीशन देगा. वो क्यों देता है, अगर कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसको लॉन्च करने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, सेल करने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, तो अगर कंसाइनी उसको अच्छे से सेल कर पा रहा है तो उसको ओवरहेडिंग कमीशन मिलता है और एडिशनल कमीशन उसको मिलता है. एक्सपेंसेस भी दो टाइप का है, एक तो रिकरिंग एक्सपेंसेस, एक तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस. रिकरिंग एक्सपेंसेस मींस जो डेली का खर्चा है, जैसे गोडाउन का रेंट है, हर महीना देना पड़ेगा, इंश्योरेंस देना पड़ेगा, सेल्स का प्रमोशन, डिलीवरी बॉय का चार्जेस डेली देना पड़ेगा. जैसे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो ट्रांसपोर्टेशन डेली नहीं आता है, 3 महीना में एक बार आएगा, 1 महीना में एक बार आएगा, कि 6 महीना में एक बार आएगा, उसको देखना पड़ेगा. इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है. बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इसका जनरल एंट्री आपको याद रखना पड़ेगा. क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, जब गुड्स डिस्पैच होता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट, इसको याद रखो. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. जब एक्सपेंसेस इंकर होता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश. अगर चेक में होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. अगर एडवांस कुछ भी दिया है कंसाइनी ने, एडवांस मतलब कंसाइनी, तो अगर कैश में होगा तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी, अगर चेक में होगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी, अगर बिल्स में होगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी. तो बिल रिसीवेबल डिस्काउंट हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है. देन अगर कुछ रिटर्न हुआ है कंसाइनी को गुड्स, तो अपोजिट हम उस टाइम के थे, गुड्स भेजने का कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. अगर रिटर्न हो रहा है इसको अपोजिट करो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. प्रॉफिट हो रहा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू पीएल. सेम अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट आप जैसे लेजर बना रहे हो तो डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में दोनों करके आपको बनाना पड़ेगा, बट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड ऑन द राइट साइड डेट पर्टिकुलर अमाउंट. तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू पीएल, अगर प्रॉफिट अगर लॉस हो रहा है तो अपोजिट पीएल अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, इट इज लाइक ए नॉमिनल अकाउंट, ठीक है. उसमें अकाउंट में क्या क्या आएगा मैं बोल दे रहा हूँ. लेफ्ट साइड में आएगा आपका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू कैश, टू कंसाइनर एक्सपेंसेस, टू कंसाइनी कमीशन, जितना कंसाइनी का आएगा, टू कंसाइनी एक्सपेंसेस, टू कंसाइनी कमीशन, टू कंसाइनी बैड डेब्ट, प्रॉफिट लॉस, जैसे नेट प्रॉफिट आता था. क्रेडिट सेल में क्या आएगा, बाय कंसाइनी आएगा क्रेडिट सेल, बाय गुड्स सेंट ऑन अकाउंट रिटर्न, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और लॉस होगा तो बाय लॉस में आएगा. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ये क्या है, इट इज लाइक ए रियल अकाउंट. याद रखो, ज्यादा इधर 3 अकाउंट होता है, एक तो कंसाइनमेंट दैट इज ए नॉमिनल अकाउंट, और एक तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट दैट इज रियल अकाउंट, ओके, और एक तो है कंसाइनी अकाउंट दैट इज ए पर्सनल अकाउंट. तो इधर रियल, पर्सनल, नॉमिनल 3 अकाउंट अब इधर होता है. तो बुक्स ऑफ कंसाइनी में क्या है, जहां बुक्स ऑफ कंसाइनर भी पढ़े, तो एडवांस अगर हुआ है तो कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक और बिल्स पेबल. अगर सेल हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनर. अगर क्रेडिट सेल हुआ है तो कंसाइनमेंट डेटर, देखो
हम उधर डेप्टर टू सेल करते थे क्रेडिट सेल में, इधर कंसाइनमेंट आ जाएगा, कंसाइनमेंट डेप्टर अकाउंट डेबिटेड टू सेल। अगर एक्सपेंसेस को इनकर्ड हुआ है तो कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। और अगर unsold stock रहा है, then no entry will be passed in the books of consignee, as no entry was passed when he received the goods from the consignor. इधर क्या आएगा, इधर दो टाइप का, एक तो कंसाइनर पर्सनल अकाउंट और एक तो कमीशन अकाउंट। तो कंसाइनर पर्सनल अकाउंट क्या है, कंसाइनर पर्सनल इज ए पर्सनल अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द जर्नल एंट्री एंड केस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या चीज आता है, क्लोजिंग स्टॉक में आपको करना पड़ेगा, कैरेज एंड फ्रेट को देखना पड़ेगा, लोडिंग चार्जेस को देखना पड़ेगा, कस्टमर ड्यूटी को देखना पड़ेगा, क्लियरिंग चार्जेस को देखना पड़ेगा, डॉक ड्यूज, कैरेज ड्यूज पेड अप टू गो डाउन एंड ऑन लोडिंग चार्जेस इसमें देखना पड़ेगा। अनसोल्ड स्टॉक में जो स्टॉक बच गया है, आपका ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है, आपको देखना पड़ेगा कितना लोडिंग चार्जेस है, कितना अनलोडिंग चार्जेस है। ओके, जो नहीं कंसिडर होगा इस टाइम में क्लोजिंग स्टॉक काउंट करने में, क्या क्या कंसिडर नहीं होगा, वो है गोडाउन रेंट, वो है डिस्काउंट, वो है बैड डेब्ट, वो है इंश्योरेंस, वो है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और एक मैं बोल रहा हूँ ये नहीं कंसिडर होगा, क्या, गोडाउन रेंट, डिस्काउंट, बैड डेब्ट, इंश्योरेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट अनसोल्ड स्टॉक। अकाउंट इन अनसोल्ड स्टॉक में क्या एंट्री है, एक ही एंट्री है जिसको याद रखो, जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, इधर है कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। लॉस ऑफ गुड्स दो टाइप का होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे, एक तो नॉर्मल लॉस और एक तो एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या है, मैं बोल रहा था, अगर इफ यू टेकिंग सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय ट्रक, देन सम सैंड विल बी गेटिंग इवेपोरेटेड और नीचे थोड़ा गिर गिर के जाता होगा, तो एक ट्रक अगर जाओगे तो कुछ घटिया होगा। इफ यू ओपन योर पेट्रोल then also some petrol will be evaporated. That is known as normal loss. You cannot control anything. Abnormal loss is that if it is getting affected by theft, carried out, accident हो गया, fire हो गया, this is abnormal loss. The abnormal loss can be prevented. Okay, अगर fraud हो गया, earthquake हो गया, riot हो गया, war हो गया इंडिया पाकिस्तान, तो this can be avoided. Abnormal loss की entry है, abnormal loss account debited to consignment. सेम चीज इसमें भी है, पार्शियली इंश्योर्ड, फुल्ली इंश्योर्ड, नॉट इंश्योर्ड। दिस इज ऑल अबाउट दिस कंसाइनमेंट। देन विल गो टू कंसाइनमेंट अकाउंट 2। कंसाइनमेंट अकाउंट 2 टेल्स अस कॉन्सेप्ट ऑफ इनवॉइस प्राइस। ये इनवॉइस प्राइस क्या है बोलता हूँ आपको। इधर इसको सेलिंग प्राइस नहीं बोल के इसको इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस सम लोडिंग इज नोन एज इनवॉइस प्राइस। लिटिल बिट टेक्निकल टर्म इट चेंज्ड। हम उधर बोलते थे पहले कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेम थिंग इट इज हियर टोल्ड एज कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। Why this is arises? Because when the consignor is giving sending goods to consignee, suppose 1000 रुपया का चीज उसको भेजा है, ठीक है, तो उसमें तो वो कुछ प्रॉफिट मुनाफा रखेगा, उसका तो खर्चा है, तो उसमें क्या करता है 1000 का ऊपर 20% डाल के बोलता है 1200 रुपया उसको चाहिए, उसको 1200 में उसको बेचो, उसका कॉस्ट 800 की 900 होगा, लेकिन वो उसका इनवॉइस प्राइस उसको बोलते हैं 1200। ओके, द कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग is known as the invoice price. पहले हम पता था हमको cost plus profit is equal to selling price. The same here, cost plus plus loading is equal to invoice price. Okay. जैसे हम इसका निकालते थे परसेंटेज, हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम मैथमेटिक्स में निकालते थे, सेम चीज एप्लीकेबल हियर। इनका सो ओपनिंग स्टॉक देयर इज जस्ट, अगर ये लोडिंग आ गया तो लोडिंग ये जो है उसको डिडक्ट करना पड़ेगा हर जगह। लोडिंग कहाँ पर आता है, आपका ओपनिंग स्टॉक में आएगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक में आएगा, आपका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में आएगा, और अगर कुछ रिटर्न है उसमें आएगा। इसको याद रखो अच्छे से। व्हेन डज दिस लोडिंग विल अराइज, व्हेन दिस इनवॉइस प्राइस विल अराइज। इनवॉइस प्राइस विल अराइज ओनली इन केस ऑफ, एंड इट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन,
Or if it is given loading thing, then you will find it is in only in opening stock, it is in closing stock, and only in goods sent. तो जो गुड्स को भेजा है उसमें आएगा, और अगर गुड्स कुछ रह गया है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक उसमें आएगा, और कुछ में नहीं. गुड्स हर टाइम इनवर्स प्राइस में बेचने से बेटर है, बिकॉज उसका भी कुछ मुनाफा रहेगा. दैट्स व्हाई दे सेंड ऑलवेज गुड्स ऑन इनवर्स प्राइस विद सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज लोडिंग, which is known as a certain percentage of profit with addition to the cost price. Then come joint venture. Joint venture क्यों आया? Consignment का बाद joint venture आ गया. Joint venture arises because अभी मैं बोल रहा था when two or more persons join together to do a business and will share profit on agreed basis. And both this consignment joint venture might distribute and does not have any specific act. ओके, तो दोन आदमी एक बॉम्बे में है, उड़ीसा में, दो जन काम कर रहे हैं, वो उधर काम कर रहे हैं, इधर काम कर रहा है, उधर का चीज इधर भेज रहा है, ये इधर का चीज उधर बेच रहा है. दे आर गेटिंग सम बेनिफिट, दे डू नॉट हैव एनी परमानेंट सोर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस. ओके, मेन ऑब्जेक्टिव है एक तो वेंचर, एक तो प्रोजेक्ट करो, और कुछ फार्म का नाम भी कुछ नहीं होगा, इट इज टेम्पररी. दोनों जो वेंचर है उनको बोलते हैं को वेंचरर, बोथ आर ओनर एंड एजेंट. ओके, तो उनका दे आर फ्री टू डू एनी बिजनेस. कंसाइनमेंट में क्या था, कंसाइनर कंसाइनी था, ठीक है. इधर आ गया क्या आपका वेंचरर एंड को वेंचरर. एंड वेंचरर में इसमें क्या मेरिट है, डिमेरिट है. को जॉइंट वेंचरर में क्या है, इट इज लाइक पार्टनरशिप, बोथ एन ओनर एंड एजेंट. बट कंसाइनमेंट में क्या है, कंसाइनर ओनर है एंड कंसाइनी एजेंट है. दोनों का कुछ एक्ट नहीं है. कंसाइनमेंट में फंड सब कंसाइनर देता है, बट जॉइंट वेंचर में दोनों देंगे. जॉइंट वेंचर में अगर एक छोड़ के चला गया तो बंद हो गया. कंसाइनमेंट में कंसाइनर इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द बिजनेस. कंसाइनमेंट में गुड्स होता है कंसाइनर का, बट इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर देयर इज जॉइंट ओनरशिप. जॉइंट वेंचर में 4 मेथड है, बट इन केस ऑफ कंसाइनमेंट एक ही मेथड है. ओनली बोथ बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करेंगे, एक तो कंसाइनर एक तो कंसाइनी. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करोगे, वन को वेंचरर करोगे, ऑल को वेंचरर करोगे, मेमोरेंडम ऑफ जॉइंट वेंचर में करोगे, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में करोगे. हाउ टू रिकॉर्ड द बुक्स ऑफ को वेंचरर. अगर को वेंचरर दोनों कुछ पैसा दे रहे तो उसका एंट्री होगा बैंक में, और कैश में दे रहे कैश अकाउंट डेबिटेड टू को वेंचरर. इधर परचेजिंग समथिंग, देन परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश होता था. परचेज अकाउंट का जगह जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश इज ए नॉमिनल अकाउंट. If goods are supplied by other co-venturer, then joint venture account debited to co-venturer account, personal account. अगर कुछ खर्चा हो रहा है तो हम पहले करते थे expenses to cash, normal journal entry, but इधर हम करेंगे joint venture account debited to cash, because joint venture is a nominal account. The benefit of joint venture is that there is no legality involved in it. The benefit of consignment is that there is no legality involved in it. No act is there. This is one of the important benefit. But their trust and their faithfulness cannot be legalized. Okay, sometimes they go for underwriting of share. What is underwriting of share? जब कंपनी का शेयर अब कुछ नहीं सेल हो रहा है तो कंपनी गो फॉर अंडरराइटर्स. अंडरराइटर्स आर दोज हु गिव गारंटी टू द कंपनी टू अंडरटेक दिस मच ऑफ शेयर. इतना शेयर वो लेंगे, उसके लिए उनको कमीशन मिलता है. तो कमीशन उनको मिलता है, उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन. द टोटल प्रोसेस इज नोन एज अंडरराइटिंग. सेपरेट सेट बुक्स में क्या है, 3 अकाउंट है. एक तो जॉइंट बैंक अकाउंट है, एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट है, और एक पर्सनल अकाउंट है. जॉइंट वेंचर नॉमिनल अकाउंट है, जॉइंट बैंक रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है आपका पर्सनल अकाउंट ऑफ ईच को वेंचरर. तो ये जनरलिटी आप अगर नहीं याद रखेंगे तो इसको आप नहीं डाल पाएंगे. और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या है, इधर ईच को वेंचरर रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द जॉइंट वेंचर. ओके, तो ये को वेंचर उसका रखेगा रिकॉर्ड. वो ये नंबर 1 को वेंचर रिकॉर्ड ऑल डिटेल्स ऑफ को वेंचर 2 and co-venture 2 will record all details of co-venture 1. Okay, तो ए सपोज ए एंड बी, ए का अकाउंट में बी का
नाम में रिकॉर्ड होगा, बी का अकाउंट में ए का नाम में रिकॉर्ड होगा. जैसे कुछ खरीदता है, ए गुड्स खरीदता है फॉर कैश, देन जॉइंट वेंचर विल बी अकाउंट डेबिटेड टू कैश. अगर बी कुछ सेल गुड्स करता है, ओके, देन कैश अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर विल ए. रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ऑल को वेंचरर, मतलब दोनों का को वेंचर बुक्स में रिकॉर्ड होगा, जो भी चीज खोला है सेल. दिस आर सम मेथड्स. Then last is recording in the books of only one co-venturer. तो रिकॉर्ड अगर वन को-वेंचर में होगा तो क्या होगा, जैसे कुछ एक्सपेंडिचर हुआ ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश होगा. अगर बैंक होगा तो जॉइंट वेंचर टू बैंक. When the co-venturer recording the transaction sell the goods for cash sell, it will be cash to joint venture. अगर चेक में आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू को-वेंचर जॉइंट वेंचर. एंड कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, क्या होता है पहले कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर. इधर आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर पर्सनल अकाउंट. कमीशन अगर होगा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन और सैलरी. So this is all about your joint venture and consignment. This is today you have discussed a lot. Any doubt if you have, you can ask. Today we have discussed block 3 and block 5 simultaneously. In the next class we'll discuss block 4 and block 6. Block 6 is relating to all computerized and block 4 is of hire purchase and branch. Any doubt you can ask. We'll have 5-10 minutes. I've given my WhatsApp number also. You can ask. I'm giving in the chat box also. If you have any doubt relating to your subject, okay, that also you can ask. I'm giving it. WhatsApp number and call number. You can ask me a doubt. Note down. I have written in the chat box. If you have any doubt also, letter part, you can WhatsApp me and you can call me also. The first number is the WhatsApp number and the second is the call number. Any doubt relating to the accounts and this, yeah, you can also ask me. Yes, please ask. Any doubt if you have. No doubt, then we'll tell Ajit sir to wind up. If Ajit sir is there. This accounting you have to, I'm telling you one guidance to you, that you have to understand the concept and understand the journal entry and treatment and posting. Treatment means the journal entry and where they are posted, where they are debited and credited. If you remember the journal entry, then you can do the accounts, the format, the journal entry, everything you can do. So only remembering the journal entry and understanding the concept and the method will do your work. Otherwise, you will find very difficult. Those are not from the accounting background, they will find very difficult. Those are from the accounting background, plus 2, you might have studied all this. And this is purely a practical subject. You need practice and you need regular intervention of doing this in pen and paper. Only telling in theory will not serve the purpose. You have to practice it. So I have already given my number in WhatsApp in this chat box, WhatsApp and call number. So more you practice, the more you will get to know about this. So if there is no doubt, we'll leave the class. Thank you for attending the class. Okay, thank you. You can leave the class.